Okay. Bismillahirrahmanirrahim. And today I am going to give you the interactive session on the PowerPoint slides that have been always already आप लोगों की जो क्लासरूम है उसके अंदर वो अपलोड हो चुकी हैं. Our chapter is chapter number 2 of the ebook, और that is about marketing and customer value. So moving on, हमारे पास जो है इसके अंदर जो हमने पढ़ना है, that is about marketing involves satisfying customer needs and wants. Very clearly, you people know about it. The task of any business is to deliver customer value at a profit. We all know, while being socially responsible. I think holistic marketing का basic idea है ये. In a hyper competitive economy, hyper competitive means that the economy is really very competitive nowadays because there's a lot of competition with increasingly rational buyers faced with abundant choices. आपके buyers बहुत ज़्यादा है market के अंदर और उनको बहुत सारी choices भी दस्तयाब हैं. A company can only fine tune the delivery process and choosing, providing and communication the superior value. जहाँ हम अपने आप के अंदर difference कर सकते हैं वो ये है कि हम बहुत carefully कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को चूज करें, प्रोडक्ट को डिलीवर करें, प्रोडक्ट को क्रिएट करें. सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है इस वक्त वो है द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस. वैल्यू को डिलीवर करने का प्रोसेस क्या है. इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केट. मार्केट को ट्रेडिशनल व्यू आप कैसे करते हैं. सबसे पहले फर्म्स मेक समथिंग एंड देन दे सेल इट. फर्म्स पहले चीजें बनाती हैं और वो बेच देती हैं. अगर मैं इसका आइडिया लूं तो ये गलत नहीं होगा कि इट इज वेरी मायोपिक दैट यू फर्स्ट मेक अ प्रोडक्ट एंड देन यू सेल अ प्रोडक्ट. इसके अंदर मार्केटिंग जो आती है वो सेकंड हाफ के अंदर आती है. मार्केटिंग अगर पहले हाफ में आए तो उसका मतलब यह है दैट यू आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स फर्स्ट. Companies that subscribe to this view have the best chance of succeeding in economies marked by good shortages where consumers are not fussy about quality, features and style. If I take an example of mass marketing के अंदर you make a product for many people at one time and you do not segment the market. And when you do not segment a market, आप product को बनाते हैं और वो सबके लिए बना के सेल कर देते हैं. जब आप प्रोडक्ट पहले बनाते हैं तो मार्केटिंग एक्चुअली उसके सेकंड हाफ के अंदर टेक प्लेस करती है, पहले हाफ के अंदर नहीं करती क्योंकि उसके अंदर तो आप प्रोडक्ट बना चुके होते हैं. So the traditional view of the business process will not work in economies where people face abundant choices. लेकिन जहाँ पे आपके पास बहुत सारी choices हैं, बहुत सारे competitors हैं, उधर आपको बहुत देख के अपने सिस्टम को चलाना होगा. उधर यू हैव टू हैव अ competitive, differentiative, competitive advantage. Mass markets are actually splintering into numerous micro markets. Mass market का मतलब ये है कि one product to everybody is now splintering into numerous micro markets. अब आप मार्केट को बहुत सारी छोटी छोटी मार्केट्स, छोटी छोटी सेगमेंट्स के अंदर डिफाइन कर रहे हैं जिनकी अपनी ओन वॉन्ट्स हैं, जिनकी अपनी ओन परसेप्शंस हैं, जिनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, जिनका अपना बाइंग क्राइटेरिया है. The smart competitors must design and deliver offering for well-defined target markets. The realization inspired a new view of business processes that places marketing at the beginning of the planning. पहले दौर के अंदर traditional view के अंदर marketing used to take place on the second half, but in this case, marketing basically takes place before the planning. और वो कैसे होती है कि कंपनी की जो ओरिएंटेशन है दैट इज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन टू जस्ट प्रोवाइड द कस्टमर विद द प्रोडक्ट. सो प्लानिंग से पहले आपका जो एक फिलोसफी है वो मार्केट ओरिएंटेशन की है, वो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की है. इंस्टेड ऑफ एम्फसाइजिंग मेकिंग एंड सेलिंग, कंपनीज नाउ सी देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ अ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस. खाली प्रोडक्ट बना देना और बेच देना इज नॉट द गेम. कंपनीज अब इस चीज को देखती हैं कि वो इंटायर वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के अंदर अपने मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव को इंड्यूस करें. वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या है कि कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहाँ वो प्रोसेस हो रहा है, कैसे वो प्रोडक्ट बन रहा है. आप लोगों ने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर भी पढ़ा है, बिजनेस बाइंग बिहेवियर भी पढ़ा है. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर यू एक्चुअली सी व्हाट कंज्यूमर नीड्स आर, और बिजनेस बाइंग बिहेवियर के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि यू आर एक्चुअली ड्रिवन बाय द ड्राइव नीड्स. उसके केस के अंदर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कंज्यूमर चाहता क्या है, कंज्यूमर चाहता क्या, और बिजनेस डिलीवरी वालों को इस बात का पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कौन से सप्लायर्स को, कौन से रीबायर्स को हायर करना है in order to give the desired outcome to the customers.
The value creation and delivery sequence can be divided into 3 phases. इसके अंदर 3 phases हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है choosing the value. चूजिंग द वैल्यू का मतलब ये है कि सबसे पहले कंपनी इस बात को डिसाइड करे कि वो क्या चूज कर रही है प्रोवाइड करने के लिए. वी कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग, वी हैव टू चूज दैट व्हाट वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट. चूज करने के बाद कि हमने क्या चीज मार्केट को प्रोवाइड करनी है, देयर इज अ पॉइंट वेयर इट यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू. आपने वैल्यू को प्रोवाइड करना है, आपने उसको प्रोसेस करना है, उसको एक shakal deni, and then you have to provide the value, and then you need to communicate the value to the customer. So these are the 3 steps. You have to choose the value, you have to provide the value, and then you have to communicate the value. Then there's a 3 V's approach. Again, there are 3 values approach where you have to define the value segment. आपने सबसे पहले ये बात define करनी है कि value choose करने के लिए आपने कौन सी value segment, कौन सी segment ऐसी है जिसको आप अपनी resources को देखते हुए provide कर सकते हैं. फिर आप ये डिफाइन करेंगे कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं आप मार्केट से. और फिर वैल्यू नेटवर्किंग क्या है, आपका क्या नेटवर्क है, कहां से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, कहां वो प्रोसेस हो रहा है और वो किधर को जा रहा है. देन देयर इज अ वैल्यू चेन. वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क के अंदर, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क में सबसे पहले यू चूज अ वैल्यू, देन यू प्रोवाइड अ वैल्यू, देन यू कम्युनिकेट अ वैल्यू. देन देयर इज अ वैल्यू चेन. We need to understand what is a value chain. The value chain is a tool for identifying to create more customer value. According to this model, every firm is a synthesis of activities performed to design, produce, market, deliver, and support its product. The value chain actually has got 9 activities, 5 primary and 4 secondary. 5 primary activities are, the primary activities are inbound logistics. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब यह है कि कंपनी के अंदर क्या चीजें आ रही हैं प्रोसेस होने के लिए. दे आर or bringing materials into the business which are operations or converting them into the final products. Outbound logistics or shipping out final products, market them, which included sales and servicing them. The support activities, procurement, technology, development, human resource management, and firm infrastructures are handled in the specialized department. The infrastructure covers the cost of general management, planning, finance, accounting, legal, and government affairs. ये वो primary activities कौन सी हैं? वो एक्टिविटीज जो कि आपको जरूरी चाहिए हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दे आर इनबाउंड. एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आर दोस्त जो कि शिप आउट हो रहे हैं कंपनी के अंदर से. सपोर्ट एक्टिविटीज आर प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट का मतलब यह है कि फ्रॉम वेयर टू गेट द प्रोडक्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टोर द प्रोडक्ट. टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि एड करता है, कंपनी को सपोर्ट करता है. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. Then the firm task is to examine its cost and performance in each value creating activity and to look for ways to improve it. Managers should estimate their competitors' cost and performance as benchmarks against which to compare their cost and performance. They should go further and study best of the class practices of the world best companies. Then it comes the firm's कोर बिजनेस प्रोसेसेस. कोर बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर 5 प्रोसेसेस आते हैं. नंबर 1, द मार्केट सेंसिंग प्रोसेस. कंपनी के अंदर सबसे पहले जो प्रोसेस वर्क करता है, दैट इज टू सेंस द मार्केट, टू अंडरस्टैंड दैट विच वैल्यू यू प्रोड्यूस. उसके बाद द वैल्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, आप क्या प्रोडक्ट मार्केट को देना चाहते हैं. देन कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, आप कस्टमर को किस तरीके से टारगेट करेंगे और किस तरीके से कस्टमर को एक्वायर करेंगे. हाउ यू विल बिल्ड अप द कस्टमर रिलेशनशिप with the customer. How you're going to fulfillment आप कैसे करेंगे. How you will approve the orders. business to business के अंदर आप किस तरह order लेंगे, कैसे order ship होगा, किस तरह वो पहुंचेगा, and how you're going to work about it. Then we have strong companies are re-engineering their workflows and building cross-functional teams. And this is ending up on the core competencies. कंपनीज को सबसे पहले अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोर कॉम्पिटेंसीज मे बी इन द लेबर पावर, मे बी द मटीरियल्स, मे बी द मशीन्स, मे बी द इंफॉर्मेशन और एनर्जी. Many companies today outsource less critical resources if they can obtain better quality or lower cost. The key is to own and nurture the resources and competencies that make up the essence of the business. Core competencies has got the 3 applications. Number 1, core competency अगर आपको पता है कि what you are best at, you can actually build the competitive advantage over that. आपके पास variety of markets है, आप अपनी core competency अगर आपको पता है तो आप इस बात को देख सकते हैं कि which markets you can cater. And
जब आपको अपनी खासियत का पता है तो आपको कंपैटिटर जो है कॉपी नहीं कर सकता. सो इन दिस रिगार्ड वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के अंदर या वैल्यू चेन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए यू नीड टू हाईलाइट योर core competency. And last but not the least, market driven organization was as in excelling in 3 distinctive capabilities. You need to sense the market, you need to link with the market, you need to have a channel bonding, you need to realign with the core competencies, you need to define the business idea concepts, you need to reshape the business scope, and you need to reposition the company's identity. Market sensing is to sense the market, get into the market, see what market really demands. Then you need to link with the customer. Then you need to bond with the customer. Then there's a business realignment that may be necessary to maximize the core competencies. Aapki core competencies kya hai? You need to highlight that. You need to redefine the business concept. You need to reshape the business scope, what your business scope is, what it is heading towards, and then you need to reposition the company's brand identity. This is what the market-driven organizations really do. This is the end of the first recorded lecture that has been posted to you. अब आप मुझे ये बताएं if you have any questions from this particular topic. Then we'll move further. Are we all clear with the value delivery process and the value chain? Class, are we there? Safa? Yes, ma'am. आप लोगों को क्लियर है? जी मैम क्लियर है. Okay. Anka? Yes, ma'am. Are you clear about it? Yes, ma'am. Hira? Waleed, are you clear Yes, about the ma'am. concept? Okay, I'm going to start the next presentation so that if you have any problems in that, you tell me about it. Okay, can we all see the slides? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. This lecture is also with you people in the form of recorded lecture as well as the PPT slides. I'm going to just go through it. If you have any issues, you can actually discuss this thing. The central role of strategic planning. We all have gone through the strategic planning. Basically, it's a fit between the goals and objectives of the organization and what are the opportunities available to us in the larger environment. Strategic planning actually works upon that what company is basically good at and what basically we have got as an opportunity in the outside environment. So if I see about the holistic marketing orientation, आपको holistic marketing के बारे में बहुत completely idea, I think I don't need to go about it because you know it very precisely. Holistic marketing basically sees the integrative aspect of the value exploration, value creation, and value delivery. Value exploration is somehow that you need to explore what value is to be given to the customer. Then value is always created on the basis of what exploration details and the data are. And then you have to deliver the value to the customers. When you are too much into the customer, you will actually build the long-term customer relationships, and we all know about it, that it is on the basis of the high level of the product quality that you promise, that you make a value proposition to the target market. It's the service and the speed. Next, we have the entire network or a framework of holistic marketing framework. Value exploration basically kya kar rahi hai? It is somehow how can a company identify new value opportunities? Then what is value creation? How can a company efficiently create more promising new value offerings? And then what is value delivery? How can a company use its capabilities and infrastructure to deliver the new value offerings more efficiently?
This is about the holistic marketing perspective. What value exploration has to tell us? It has to tell us that it is to find new value opportunities as a matter of understanding the relationships among three spaces. वैल्यू एक्सप्लोरेशन जब हम करने जा रहे होते हैं, जब हम मार्केट के अंदर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वी हैव टू सी द थ्री एस्पेक्ट्स. नंबर वन इज द कस्टमर कॉग्निटिव स्पेस. Cognition comes when we have to seek in that what customer is not actually saying with his, verbally वो ये बात नहीं कर रहा, latently वो ये बात को feel कर रहा है. When marketer goes into the market, basically they work as a psychologist and they try to dig out something which customer is not saying. The customer cognitive space basically reflects existing and latent needs and includes such as the needs for participation, stability, freedom, and change. That what basically customer expects of a product that he really wants to have and give benefit to its life, to his life. Then company's competence space. Basically what company competency is, that what company is basically focused at. Company ka scope kya hai? What company is basically capable of providing. कंपनी बेसिकली क्या कॉम्पिटेंसी रखती है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द कस्टमर, कहाँ उसका कस्टमर बैठा है, वो किस तरीके से कस्टमर को रीच करती है. एंड देन इट्स अ कोलैबोरेटर रिसोर्स स्पेस के कौन कौन कंपनी को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कोलैबोरेट करता है कंपनी के साथ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वैल्यू टू द कस्टमर. सो व्हेन एवर वी आर होलिस्टिकली लुकिंग एट प्रोवाइडिंग द वैल्यू टू द कस्टमर, वी हैव टू सी द थ्री स्पेसेस कि कस्टमर का माइंडसेट क्या है, कंपनी की कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी क्या है, और कंपनी के साथ कोलैबोरेट कौन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द राइट वैल्यू टू द राइट कस्टमर. Then it comes the value creation. Once you have explored, once you have seen the three spaces, when you have studied that, it's the time to create the value. And to create the value, marketers include identifying new customer benefits from the customer's view. Customer के लिए वो benefits देने important नहीं है जो customer को already वो provide कर रहे हैं. Competitors, we have to see what competitors are not providing and how customers are looking at it. So utilizing core competencies from its business domain, selecting and managing business partners from its collaborative networks. So we need to create something which makes us different than the rest of the competitor, what they are different. How we make a difference in comparison to them. Then it's a value delivery part where you have to deliver the value. आपको कौन कंपनी करता है इसको डिलीवर करने में. Customer relationship management allows the company to discover who its customers are, how they behave, what they really need, and how they can be reached. It also enables the company to respond appropriately, coherently, and quickly to different customer opportunities. So this is how holistically we see at the entire perspective. Coming on to the central role of the strategic planning. Strategic planning basically is to have a right fit between the organization's goals and the capabilities and the changing marketing opportunities. Why we really do that? Because we want to be the long run survivor and long term growth opportunist in the market. If we see a very short term perspective in the market, we won't be able to survive in the market. So in this regard, strategic planning encompasses four aspects. The first aspect, as a business student, we need to understand situation is very important. For whatever we experience today cannot be implemented in the situation which is similar to the perspective of today, because you know what, every time the situation has got the different actors, the different natures, so we have to keep, we can take the reference from the previous experiences, हम पहले experiences से references ले सकते हैं, but हम उसको as it is implement नहीं कर सकते. So strategic planning always calls for understanding the right situation, then the opportunities which are available in the external environment, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंपनी के, एंड व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल. अगर हमें अपनी रिसोर्सेज का नहीं पता, हाउ कैन वी प्रॉमिस to the customer that what we can really provide. So in order to be a long-term survivor in the market, first we need to see the situation which we are in. We need to see the opportunities that we have, and what basically our objectives are, which are highly dependent upon the resources जो हमारे पास available हैं. If we go beyond the availability of our resources, we cannot simply make it happen. So basically strategic planning करती क्या है? It sets the stage for the rest of the planning in the firm. आपके एनुअल प्लान्स, आपके लॉन्ग रेंज प्लान्स, आपके स्ट्रेटेजिक प्लान बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपके करंट बिजनेसेस कितने पानी में है, व्हाट यू आर डूइंग इन योर करंट बिजनेसेस, व्हाट यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग. जैसे आप बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में हम सबको आइडिया है, इसको मैं डिटेल में अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगी, बट बीसीजी मैट्रिक्स एक्चुअली गिव्स यू
picture which is a relativity between that what is the market share and what is an attractiveness of the product in the market. There you get to know about कि आपके existing businesses क्या काम कर रहे हैं, market के अंदर कितना share है आपका आपके competitor के मुकाबले में, और आपका attraction level क्या है market के अंदर. When you gauge that, basically you can actually see the situation to the fullest. You can see what resources are needed to be put in. You can see that what basically your market share as compared to the competitor kidhar khada hai, and you can actually gauge the entire positioning of the brand in the market. So in this regard, successful marketing requires companies to have capabilities such as understanding the customer value, delivering the customer value, and then capturing the customer value as well. You get the customer and you then retain the customer and then work for getting the new customer in your pipelines. The companies like Procter & Gamble, Southwest, and Nike describes how the company creates its customer value, because agar aapko inke naam yaad hai, definitely they have taken a long journey from being just a product to the brand. It's an entire journey where they have promised the right value proposition depending upon which situations they are in and what resources do they have to fulfill the the desired need of the customer in the specific area of provision. So these companies focus on the customer and reorganize to respond effectively to the customer needs. What do they have? They have well-staffed marketing departments, and you need to add one more thing over here कि marketing department आजकल के दौर के अंदर अकेला काम नहीं करता. Marketing department can only work if the entire value delivery process is thinking about marketing, because marketing is basically a philosophy and an approach and not just simply a department. To ensure that they select and execute the right activities, marketers must give priority to the strategic planning and assessing each business strength by considering the market growth rate and company's position. I would refer here to understand BCG, which I'm going to explain in the next lecture. अभी आपको खैर आइडिया बिल्कुल है कि बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, आपके करंट बिजनेसेस की ग्रोथ रेट को और अट्रैक्टिवनेस इन द मार्केट को गेज कर रहा होता है और आपको ये बता रहा होता है कि आप मार्केट के अंदर किधर स्टैंड कर रहे हैं एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स. So for each business, the game plan for achieving its long-run objectives, most large companies consist of 4 organizational levels. सबसे पहले decision-making level कहाँ होता है? Corporate level के ऊपर. Then it's a divisional level. Then it's a business unit level. Then it's a product level. Corporate headquarters is responsible for designing a corporate strategic plan, which is entire SWOT analysis, depending upon what strengths companies have, what weaknesses does the company possess, what opportunities are available. It makes decision on the amount of resources to allocate to each division, as well as on each business to start and eliminate. Each division establish a plan covering the allocation of funds to each business unit within the division. आप सारी चीज़ों को evaluate करके अपनी resources को allocate करते हैं. Corporate division basically are the top level management which is actually deciding the destiny of the organization by keeping the entire know-how of the market, that where basically the products are going, how the products are basically working as compared to their competitors. Because if you're not going to gauge that, we cannot invest the money into the right SBU. So in this regard, there's a marketing plan that we need to make. It's a central instrument for directing and coordinating the marketing efforts. We need to make the marketing plan, जिसका आपको मैंने assignment भी दे दिया है. You can actually view the marketing plan and you have to make a marketing plan on the basis of your own choice of product. Marketing plan basically 2 levels पे काम करता है. एक strategic level है और एक tactical level है. Strategic marketing plan basically lays out the target market and value proposition. Strategic plan basically आपकी value exploration के बाद इस बात को figure out कर देता है कि आपकी target market क्या होगी, आपका जो market उसका basically क्या entire geographic location क्या होगी, उसकी basically psychographics क्या होंगी, entire study of the basis of segmentation that we have read in the previous chapter. और क्या value proposition हम उनको देंगे. Whereas the tactical marketing plan basically see that how we are going to reach the market, the tactics that we apply to reach the market in the terms of हमारे product के features क्या होंगे. Tactics के अंदर ये involve है कि हमारा customer, हमारा competitor क्या product दे रहा है और हमने क्या product देना है. We work on entire 4 P's and 7 P's depending upon our product and the services nature. So this is about the strategic planning. Now I'm going to come to the questions. You can actually listen to the recorded lecture as well. But now you can ask me the questions. Please. Assalamualaikum, ma'am. Ji, Safa.
मैम टैक्टिक मीन क्या है इसका, यानी कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा आप मार्केटिंग टैक्टिक का जो आपने अभी बोला है? देखो, टेक्टिकल का मीनिंग मैं इस तरह से लेती हूँ, टैक्ट हैज कम आउट ऑफ द वर्ड टैक्ट। जो टेक्निकल मार्केटिंग है, इट हैज कम आउट ऑफ द वर्ड दैट टैक्ट क्या होगा आपका मार्केटिंग को करने का। देखो, व्हेन आई टीच यू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स, आई टीच यू 4 P's, राइट? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हर ब्रांड का एक अपना टैक्ट इसका मिक्स बनाने का। हैव आई मेड माय सेंस क्लियर? Somebody is very good at यस मैम। product features, somebody is very good at servicing, someone is very good at pricing। प्राइसिंग के ऊपर आप कभी कभार बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज आपकी सप्लाई चेन के अंदर कॉस्टिंग बहुत जबरदस्त होती है। So it depends upon what tact do you use to earn the profits, right? So it is about that what is your basic core competency and how you basically design it to target the right market. ओके मैम। और मैम आपने जो असाइनमेंट दी है लास्ट टाइम, आपने लिमिट रखी थी वर्ड्स की कि एटलीस्ट आपके इतने वर्ड्स होने चाहिए। तो अभी कोई लिमिट होगी या फिर ना हम ना ना जो ना, आपने पूछा है मार्केटिंग वही? प्लान बनाने में। जो जो पहले वाला असाइनमेंट आपने दिया है, एक तो आज दिया है ना और एक तो पहले दिया था, उसके बारे में पूछ रही हूँ। नहीं, there's no word count। अगर मैंने नहीं लिमिट रखी तो नहीं है कोई लिमिट। ओके मैम। ठीक है? ठीक, ये वाले थैंक यू लेक्चर सो के मच। अंदर नो प्रॉब्लम। एनी वन एल्स? रिजा, मोहसिन, निहाल, मुबीन, इफ आई कैन मैम सी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी। मैम आप मेगा और मास मार्केटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस एक्सप्लेन कर देती है? मेगा मार्केटिंग, mega marketing is entirely your point of view. You have to gauge it, you have to do your assignment first. लेकिन mass marketing में मैं जरूर आपसे बात कर लूंगी। mass marketing is basically you're making a product or you are actually using one product to cater many. You are not splintering the market or you're not dividing the market. Mega marketing को खुद hit करना है बेटा, because that is an assignment and that would be discussed in the other class once I will be receiving everything. तो मैम मेगा और मैथ में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है? तो इसको खुद हाईलाइट कर लो ना, इसको खुद फाइंड आउट कर लो ना। यही तो मैंने असाइनमेंट दिया है। मैथ ओके मार्केटिंग मैंने समझा दी है, माइक्रो मार्केटिंग मैंने समझा दी है, मेगा मार्केटिंग को आप लोग खुद देख लें। ओके मैम। दैट इज योर असाइनमेंट ना। अब मैं ये ओके कोशिश मैम। करूंगी कि मैं आपको ये जो चैप्टर है उसको कट करके पीडीएफ से मैं आपको अलग से आपके क्लासरूम्स के अंदर लगा दूं, सो दैट यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स वेरी क्लियरली। अदरवाइज ये ई बुक का चैप्टर नंबर 2 है। जैसे आप मैम कह रही है ना वैसे लगा दें, वो ज्यादा बेटर है। ओके बेटा। एनी अदर क्वेश्चन? टाइम, अपनी असाइनमेंट्स को टाइम के ऊपर सबमिट कराएं, बिकॉज दैट्स अ रिकॉर्ड विद मी। किसने लेट करवाया, किसने टाइम पे करवाया, इसको जमा हो जाना चाहिए। क्लासरूम्स के साथ अपडेटेड रहें और प्रॉबेबली कल भी मैं आपका एक इंटरेक्टिव सेशन लूंगी। और कल आप लोगों की कल क्लास भी है, कल इंटरेक्टिव सेशन भी आप लोगों का एक और होगा। वो लेक्चर्स मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी। इज दैट क्लियर? ओके मैम मैम। टाइमिंग बता दें आप इंटरेक्टिव बेटा वो लेक्चर आई की। थिंक प्रॉबेबली वो लेट ही होगा, इसी तरह से होगा जिस तरह मैंने अभी रखा है, बिकॉज मैम इन द काइंडली बिगनिंग। आफ्टर मगरिब, हाँ, क्योंकि अभी अपने मगरिब में स्टार्ट किया ना तो इसलिए। तो मगरिब पढ़ के ज्वाइन कर लेना, मैंने भी पढ़नी है अभी अभी। भी मैं मगरिब पढ़ने के लिए बैठी हुई हूँ एक्चुअली। चलें। ऑल राइट बेटा, इफ यू डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन पोस्ट मी द क्वेश्चंस इफ यू एवर हैव। विल माई टेक अ लीव नाउ? कोई भी क्वेश्चन है यू कैन पोस्ट मी इन द गूगल क्लासरूम्स और यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दैट। सो टिल देन आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, वी शुड बेटर टेक अ लीव नाउ। यस मैम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।